हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज प्रीपोजिशंस। सो इस चैप्टर में हम प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी स्टार्टर पॉइंट इज गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स से लिखे, इनको आपको फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट वन इज अ मंकी डैश द ट्री। अब मंकी जो है वो कहाँ पर है, वो ट्री पे है, तो आप लिखोगे ऑन, अ मंकी इज ऑन द ट्री। नेक्स्ट वन, अ कैट डैश द टेबल, अ कैट अंडर द टेबल। नेक्स्ट वन, द सन डैश द स्काई, द सन इज बिलो द स्काई। ओके। नेक्स्ट वन, अ डॉग डैश द ट्री, अ डॉग अंडर द ट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स यूज किए जैसे कि ऑन, अंडर, बिलो। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर द प्रीपोजिशंस जो कि पोजीशन बता रहे हैं नाउन का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हियर यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशंस, a word which shows the relation between a noun and a pronoun and some other words in a sentence is called a preposition। मतलब कि वो शब्द जो कि एक रिलेशन बता रहा है एक नाउन के बीच, एक प्रोनाउन के बीच, ठीक है, दूसरे शब्दों के साथ, तो उसे हम प्रपोजिशन बोलते हैं, जो कि एक पोजिशन बता रहा है। द अदर वर्ड्स कैन बी अ नाउन, अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। जो दूसरे वर्ड्स है वो नाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेज आपको दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल पे है। नेक्स्ट वन इज द बुक इज इन द बैग। बुक जो है वो बैग के अंदर है। नेक्स्ट इज द बुक इज अंडर द टेबल। ठीक है, टेबल के नीचे है। नेक्स्ट वन, द बुक इज नियर द लैम्प। लैम्प के पास है। In the above sentences, the words on, in, under and near are prepositions। ये सभी क्या है, ये सभी prepositions है। A preposition is usually placed before its object, but sometimes it follows it। preposition जो है वो usually object से पहले place होता है, पर कभी कभी वो उसके बाद भी use होता है। Okay, now the next topic is kinds of prepositions। Prepositions can be classified into the following three kinds। थ्री टाइप्स के prepositions आपको यहाँ पर दिए हैं। First one is prepositions of time, next one prepositions of place, next is prepositions of direction and movement। Now let's learn about them in detail। So the first is prepositions of time। अब preposition of time में सबसे पहले आपको word दिया है at। At usually denotes a definite point of time like the time in the clock, exact time of the day, venue of place। तो at जो है वो एक definite point बता रहा है उस time का, ठीक है, जैसे कि time in the clock हो गया, exact time of the day हो गया, या फिर कोई जगह। ओके, फॉर एग्जाम्पल I get up at 6 o'clock। यहाँ पर time का बताया गया है तो हमने at का यूज किया है। नेक्स्ट वन, I heard a voice at midnight। ओके, now the next one is on। On is used before the names of days and dates। On जो है वो days और date के नाम से पहले हम use करते हैं। For example, I arrived in Delhi on Tuesday। Next one, Independence Day falls on 15th August। Now next is in। In is used before parts of the day, month, year, season। In जो है वो before the parts of the day, month, season, year के आगे use किया जाता है। जैसे कि for example, we play in the afternoon, we wear woolen clothes in winter। Now the next is by। By is used to denote the latest time by which something was or is to be done। by जो है वो latest time को बता रहा है जिसमें कोई चीज होने वाली है, ठीक है। जैसे कि for example, you should be back by 6 p.m। Next one, he should finish his project by Sunday। Now the next is for। For is used for a period of time for which an action has been going on। For जो है वो उस period of time के लिए हम use करते हैं जिसमें action जो है चल रहा है। Okay, for example, he has been sleeping for 7 hours, I have been waiting for 2 hours। Now the next one is since।
Since is used for a point of time during which the action started, the action continues till the time of speaking. Since हम यूज करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जहां जब एक्शन जो है शुरू हुआ था, ओके, एंड एक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम उसे बोल रहे हैं तब भी वो कंटिन्यू चल रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, यू हैव बीन हियर सिंस 7 o'clock. Now the next one is from. From is used to denote the time when something starts. From उस time को denote करता है जब कोई चीज शुरू हो रही है. For example, I waited for you from 8 o'clock to 10 o'clock. Next one, she was there from Sunday to Tuesday. Now the next is during. During is used for something that occurs throughout a period of time. ड्यूरिंग को हम यूज करते हैं फॉर समथिंग जो कि अकर हो रहा है थ्रू आउट दैट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल, COVID-19 स्प्रेड ड्यूरिंग लास्ट विंटर. नेक्स्ट वन, ही डिड नॉट गेट हिज ड्यू ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. ड्यूरिंग इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. ड्यूरिंग इज यूज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी हम ड्यूरिंग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्राइम टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट. नेक्स्ट वन, ही फेल डाउन ड्यूरिंग द स्टंट. नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. सो द फर्स्ट वन इज एट. एट हैज द आइडिया ऑफ एन एग्जैक्ट पॉइंट. एट जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं. It is used with small areas like village, small town, etc. and specifically before the number of your house. ये हम small areas के साथ यूज करते हैं जैसे कि village हो गए, small town हो गए, ठीक है, और specifically number of house से पहले हम इनको यूज करते हैं. For example, there was a large crowd at the bus stop. Next one, I live at 10 Zoo Road. Now student, the next is in. In is used with the name of a container, place, area to indicate where someone or something is. It has the idea of a larger area and is used in speaking of bigger towns, states, countries, etc. इनको हम यूज करते हैं लाइक नेम ऑफ अ कंटेनर के साथ, प्लेस के साथ, एरिया के साथ. फॉर एग्जाम्पल, द ड्रेस इज इन द अल्मीरा. दे लिव इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन. On is used with surface area to indicate where someone or something is. On हम यूज करते हैं surface area के साथ ताकि हम indicate कर सके कि कहाँ पर वो चीज है. Okay, for example, the magazine is on the table. Next one, there is something on your head. Now next is between. Between is used to give the sense of middle with two persons or things. Between हम यूज करते हैं ताकि हम एक सेंस ऑफ मिडल दे सके दो पर्सन्स के बीच में और थिंग्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, राम इज सिटिंग बिटवीन मेघा एंड दीपक. राम जो है वो मेघा और दीपक के बीच में बैठा है. नेक्स्ट वन, द कार इज बिटवीन अ बस एंड अ ट्रक. जो कार है वो बीच में है बस और ट्रक के. Now the next is among. Among is used to give the sense of middle with more than two persons or things. ये भी sense of medium या sense of middle को बताता है with more than two person or things के साथ. For example, distribute these toffees among the children. Next one, the rabbit hid among the bushes. Now the next is upon. Upon is used while speaking of two things, one of which is at rest and the other is in motion. Their surface may or may not be in contact. Upon को हम यूज करते हैं जब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें से एक जो है वो रेस्ट में है और जो दूसरा है वो मोशन में है. ओके, और उनका जो सरफेस है वो मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट फॉर्म में है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द चेयर. नेक्स्ट वन, द डॉग पाउंस्ड अपॉन अ पीस ऑफ मीट. नाउ द नेक्स्ट इज above. Above is used for a higher position than something. It gives the sense of vertically higher than something. Above को हम यूज करते हैं higher position के लिए, ठीक है, और एक sense of vertically higher position ये बताता है than the something. For example, the flags waved above our heads. Next one, he raised his arms above his head. Now the next is over.
Over is used for a position higher than something. It gives the sense of covering higher than or spread over something. Over जो है वो हम use करते हैं for the position which shows the higher than something. ठीक है, for example, there is a bridge over the river. Okay, next one, my father put a blanket over me. Okay, now the next is below. Below is used for a lower level of position. ये एक lower level of position को बताता है. It gives the sense of lower than something. Lower than something का ये sense create करता है. For example, there was a beautiful lake below the bridge. Next one, you can't ride below that line. Now the next is under. Under is used to indicate that someone or something is directly below something. अंडर जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई चीज जो है वो डायरेक्टली बिलो है किसी चीज के. फॉर एग्जाम्पल, द बॉल वॉज अंडर द टेबल. नेक्स्ट वन, द फार्मर वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री. नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. Now the next topic is preposition of direction or movement. So in this, the first one is from. From is used for starting at a particular place, position और condition. From को हम use करते हैं जिसमें जो चीज है जो कि एक particular thing है जो कि start हो रही है particular place से, position से और condition से. For example, he comes home from office at 5 p.m. Next one, the helicopter fell from a height of 100 feet. Okay, now the next is off. Off is used to show separation. Off जो है वो separation को show करता है. It is used in the sense of separation of the subject from up to downward direction. मतलब हम इसे use करते हैं in the sense of separation के form में of the subject to up to the downward direction. Okay, for example, he fell off the cycle. The ball rolled off the table. Now the next one is out of. Out of is the opposite of into. Out of जो है वो opposite है into का. It means from the interior of something. इसका मतलब है कि कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ आ रही. into में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ जाना, और out of में है अंदर से बाहर की तरफ आना. For example, the bird flew out of the cage. Next one, he moved out of the city yesterday. Now the next one is to. To is used to show the point of destination towards that direction. To को हम use करते हैं to show the point of destination towards the particular direction. Okay, for example, we went to the school. Next one, she went from Dispur to Guwahati. Next is towards. Towards means looking or moving in a particular direction. Towards का मतलब है कि देखना या फिर move करना एक particular direction में. For example, I saw the lion coming towards me. Next one, the boy ran away towards the temple. Now the next is into. Into denotes movement towards the interior inside of something. Into का मतलब है बाहर से अंदर की तरफ जाना. For example, the man jumped into the river. Next one, she silently went into the room. Now the next is at. At has the idea of hitting. At जो है वो represent करता है idea of hitting को. For example, he threw the stone at the dog. Now next is for. For suggests the beginning of a movement to the destination. For जो है वो suggest करता है the beginning of a movement towards the destination. Okay, for example, the children left for the school. Now the next is against. Against show pressure or contact. Against जो है वो pressure को show करता है और contact को show करता है. For example, the old man is leaning against the wall. Next one, he put the ladder against the tree. Now student, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, I hope student that you understood this chapter. आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Till then students, take care. Bye bye.